Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with KVS PGT English, and in our previous class we could complete Deep Water from William Douglas, and today again we are going through a lesson, and that is the Rattrap. Exactly, this Rattrap has a deep meaning for us as a human being, for us as a competitor, and for us to be the youth and younger generation that most of the time will find themselves in a hurdle to decide what to do in their life. So today's lesson that we're going to learn is from the work of Selma Ottilia Lovisa Lagerlof. Selma Ottilia Lovisa Lagerlof. Lagerlof. The lesson is here, the rat trap. Okay, before we move to the lesson, the rat trap, we have to go through the question session, where I will put some questions related to your formal learning, and then we'll move to the lesson Rattrap from Selma Lagerlof. Okay, before we move, I would like to remind you that the previous test of KVS PGT that we held last Sunday will be rescheduled on 2nd of February. So those who have left could not attempt the first test of KVS PGT English should be careful about the next attempt, that is rescheduled attempt on 2nd February at English Kingdom app. The time is most probably it is 9 in the evening, 9 p.m. So everyone, those who are in the group of Telegram and have not sent your batch request, must send it so that you may appear in the test. And those who want to be the part of this class where regularly you can receive the link of the class, simply you will have to message us on our Telegram number 9369542072, and with your name and with your course like KVS PGT, and simply we will add you in the group. Since the examination is going to be held on 16th February as per information by now, we are preparing according to that, and I have told you not to be panicked with the time that you are left with. Instead, you should give more attention to your learning, more time to your learning. Comparatively, you thinking about other things, because this time that has been given to everyone as a competitor there without any distinction, without any difference. So just concentrate and focus, keep yourself calm and composed on your examination, because that's the only thing you can do right now as a best, because you composed and you do better. But yes, for the test that we are continue, you should simply send us message as I told you on Telegram, and there you will find a screenshot with a batch code. Simply note down that batch code and then come to the English Kingdom app. See the bottom, there will be batches as an option. Touch it and you'll find the symbol of plus. You touch the plus symbol, simply it will ask you the batch code. So the batch code that you have noticed from the Telegram group, simply you put it down there
and send it with the OK. And we will receive you there, and you will be added on a group of English Kingdom app. There you will be able to receive the test, and be sure it's an online test, so only fixed time you will be given. If it is 9 to 10, it means 9 to 10 you will have to appear in the test, otherwise you will not be able to open it. Okay, well, so after this formal information, right, we have to move with the topic of the day, and here we go with the first question. Okay, what was the name of the movement for which Khushwant Singh just drawn one of his very famous award that he received from Indian government? What's the name of the movement for which Khushwant Singh returned one of his very famous award that he received from the government of India? What was the name of the movement for which Khushwant Singh returned his one of the most renowned award from Indian government? And we have the answer there on the screen from Khushbu, and she is followed by Ganeshwar. Now it is Sarita. Okay, much better, from Kalpana. They have all answered it correct. It was Padma Bhushan award that he returned against the Blue Star operation, and that he did it, Khushwant Singh. Going with the next question. What's the name of the author of the story, The Deep Water? What's the name of the author of the story, Deep Water? I repeat, what was the name of the author of the story, Deep Water? And we have the answers there on the screen that comes here from the reply of Sarita. She is followed by Khushbu, Ganeshwar. Okay, Ganeshwar, it's Orwell. And Kalpana. Okay. Sarita, God bless you there, Narayan. So the right answer is William Orwell Douglas is the author of Deep Water. Okay, going with the next. When did the narrator start his training for swimming under a trainer? When did the narrator start his training for swimming under a trainer from Deep Water? I repeat, the narrator started learning swimming under the instruction of the trainer in a story, Deep Water. In which month he started learning swimming? Oh, no, Ganeshwar, that's not my question. Try to understand the question. You see, there was appointed a trainer for the narrator. When he grows up, remember, when he grows up, he starts learning swimming under a trainer. So you will have to tell, when did he start learning swimming under the trainer's guideship? Oh, no, Khushbu, not that. Actually, it was October. From October to April, he continued continuously being trained by the trainer, and in April his training was over, and from April to July he himself trained, and then he moved on the big adventures
that could decide his life, that could decide his future. Okay, so actually the point is there that we have to be very, very careful about our answers. See, these are the points that you need to learn from the story. You cannot just simply go with the like facts and you have just a gross mindset on the story. Instead, you will have to keep some points, and those points will be very valuable in your examination. The simple things, and those are pointed things you need to keep in your mind. Okay, so be very, very careful. Okay, going with the next question. What was the name of the character from the story Lost Spring that wanted to own a car or wanted to drive a car? What was the name of the character from the story Lost Spring that wanted to own a car or drive a car? And we have the answer that comes here from Sarita. She is followed by Ganeshwar, and now it is Khushbu, Kalpana. They have all answered it correct. The right answer is Mukesh. Okay, now I'll move to the next. Which place did Mukesh belong to from the story Lost Spring? Which place did Mukesh belong to from the story Lost Spring? Oh, no. That's not so, Sarita. Okay, so we have the answer from Gyaneshwar. It's followed by Khushbu. Now Sarita. Oh, no Vision. It's not so. And no Kalpana. Not so. It's a Firozabad. Actually, Mukesh was from Firozabad. That's famous for bangle making. And it was Sahib Alam who was from Simapuri, very close to Delhi. Okay, going with the next one. Who wrote the story, The Last Lesson? Who wrote the story, The Last Lesson? Okay, Khushbu, then it's nice to see you being from Firozabad. Okay, and we have the answer there on the screen, starting with Khushbu, followed by Ganeshwar, Sarita. They have all answered it correct. And the right answer is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet is the writer of the story, The Last Lesson. Okay, we go with the next. What is the English meaning of French phrase, Vive la France? Vive la France. What is the English meaning of the phrase? Vive la France. What is the meaning of this phrase used there in the last lesson? I repeat, what's the meaning of the French phrase Vive la France from the story The Last Spring? And we have the answer from Gyaneshwar and now Kalpana. They have all answered it correct. Long live France. That's the right one. Long live France is the right word as the English meaning of the French expression Vive la France. Okay, which story has an abstract character, Mr. Terror? Which story has
an abstract character, Mr. Terror? I repeat, which story has an abstract character? Mr. Terror? And we have the answer coming from Ganeshwar, and he has answered it correct. The right answer is deep water. Exactly. Now it is Kalpana. She has also answered it correct, to be deep water. In deep water, actually, you see that the narrator most of the time replies very courageously to this deep water. So actually in deep water there is an abstract character, Mr. Terror. Okay, going with the next. Who wrote the story The Adventure? Who wrote the story The Adventure? And we have the answer there on the screen coming from Ganeshwar, followed by Khushbu. They have answered it correct, and the right answer is Jayant Vishnu Narlikar. That's a good one. Jayant Vishnu Narlikar wrote the story The Adventure. Okay, going with the next. Which work has the character Norbu? Which work has the character Norbu? I repeat, which story has the character Norbu? And we go with the answer there on the screen, starting with Khushbu. She is followed by Ganeshwar. They have answered it correct. Now it is Mansha and Sarita. They have also answered it correct. The right answer is Silk Road, where the narrator is a kind of on a voyage, you can say, pilgrimage, that you can say, to Mount Kailasha. Okay, going with the next. What's the name of the author who served maximum as the Justice of Supreme Court in the United States of America? What's the name of the author who served as the longest term in the Supreme Court of the United States of America? Name of the author who served as justice in the Court of United States of America? I repeat, what's the name of the author who served for a longest term as a justice in Supreme Court? And we have the answer from Khushbu. She is followed by Kalpana, Ganeshwar and Sarita. They have all answered it correct, and the right answer is William Orville Douglas. Exactly. William Orville Douglas could serve almost for 36 years, 211 days, means 211 days he could serve. Now I'll move with the last question of the day. What's the name of the poem that shows the relation between a tree and a bird? What's the name of the poem that shows the relation between a bird and tree? The name of the poem that shows, this is going to the last question of the day, that shows the relation between
a bird and tree. We have the answer that we find there on the screen coming from Sarita. She is followed by Gyaneshwar, Khushbu, Kalpana. Okay, Khushbu. Mansha, they have all answered it correct, and the right answer is the laburnum top. Okay, going with the next. Now we'll move with the description of the author there on the screen, and it is Selma Ottilia Lovisa Lagerlof. In short, she is Selma Lagerlof. Okay. The first thing about her that we can say is the first woman to receive the Nobel Prize. And that happened in 1909. So she is the first woman to receive the Nobel Prize, and that happened in 1909. And she was the first woman to be granted a membership in Swedish Academy. First women to be the part of Swedish Academy as a member in 1914. She was the first woman to be given this membership in the Swedish Academy, as you see, that goes with the Nobel Prize process. She is the first woman to be depicted on Swedish banknote. First women to be depicted on Swedish banknote, and that worth 20 kroner. That was actually the note of 20 kroner, and she became the first woman to be depicted on the note of Swedish 20 kroner. Means a 20 rupee note, like you see in India there is the picture of Mahatma Gandhi on our notes. So 20 rupee note you can say in our word, that's a 20 kroner note. She was depicted. So she was the first woman to be depicted on the note of Swedish Academy, and that happened in 1991. Well, so these three are very, very important points that you must notice. Okay, Khushbu, will do. And as I told you, she was 33-year-old when first novel of her, that was Gosta Berling Saga. Gosta Berling's Saga was her first novel to be published, and that happened when she was 33-year-old. She was born on 20th November 1858. 20th
November 1858 she was born, and her father was Eric Gustav Lagerlof. Eric Gustav Lagerlof was the father of Selma, and mother was Louise Lagerlof. So they were the parents of Selma Ottilia Louisa Lagerlof. She could study at Höger in Stockholm from 1882 to 85. So her education primarily goes on Höger. That was between 1882 to 1885. That was the later education at. And from this, she got an opportunity to work as a teacher, and she taught at Landskrona. Landskrona was the name of the school. That was actually high school, where she taught from 1885 to 1895. She worked as a teacher. Okay, the work named Jerusalem was a work of her. It was so much famous that it was compared to the works of Shakespeare and Homer. You know Homer and Shakespeare, but yes, this work, Jerusalem, was compared for its craftsmanship like to be the work of Homer or the legendary literary person William Shakespeare. Means even almost from the first attempt of her, Jerusalem established herself as a great author and compared to be one of the like Homer and Shakespeare. In 1992, National Teachers Association in 1902, National Teachers Association, National Teachers Association asked her to write a children book on geography. Okay, means she was writing, but they asked her to write a book on geography for children, and she wrote Nils Holgersson's Nils Holgersson's. This was actually the children book on geography as a novel that she wrote after the request of National Teachers Association. Nils Holgersson's, that was a novel on children,
especially emphasizing on geography after asked by National Teachers Association. She had a good friendship with Sophie Elkan. Sophie Elkan was a Swedish writer, Sophie Elkan, and they could meet in 1894. 1894, she could meet a Swedish writer. And the two became friends. Sophie Elkan and Selma Lagerlof became friends after meeting in 1894. She won, as I told you, the Nobel Prize on 10th December 1909. This was on 10th December 1909. She won the Nobel Prize. And please write down the statement for which she was given the Nobel Prize on 10th December 1909. Okay, please write down. In appreciation of the lofty idealism, in appreciation of lofty idealism, comma, vivid imagination, comma, and a spiritual perception that characterize her writing. She could receive two other awards. The first one again in 1909, that was Litteris et Artibus. Litteris et Artibus. This was the award that she received in 1909. The same year she received the Nobel Prize. Litteris et Artibus. That was the award. And the next she received in 1926, named Illis Coram. Illis Coram as an award she received in 1926. So three major awards are under her name. The biggest one, as we see, is the Nobel Prize of 10th December 1909. The next one is Litteris et Artibus of 1909. And the next one is Illis Coram of 1926. Okay, now we move to the next step, as she breathed her last on 1940 of 16th March. 16th March 1940, she breathed her last. So the lady was born on 20th November 1858, could breathe her last on 16th March 1940, and left such a big awards and honor to be the first woman as a member of Swedish Academy, as she joined in 1914, to be the first woman to receive the Nobel Prize in 1909, first woman to be
depicted on the 20 kroner note of Swedish banknote. So this had been actually an honor and a greatest honor, as we see, to be literary person, to be compared even from the earliest work of her, Jerusalem, with the great legendary literary persons like Homer and William Shakespeare. Who doesn't know him? So such a great names were given, and she's a leading literary figure in the literature of Swedish life, and actually she has mentioned everything that was real. Actually, when we come to characterization of her, you will find that most of the things that are related to Selma Lagerlof in her story are actually the real one. So she was famous for going through the real characters. Means her characters are not all the time that they are fictional, and that you will find from this story that you're going to read the Rattrap as well. Here as well, you will see that she is using some real character. So characterization is not all the time fictional, it is real as well, you'll see. Well, the work Rattrap was published on 8th August 1887. 8th August 1887 is what published for the first time, and the publication was done in a newspaper, and that was a Swedish newspaper named Göteborgs-Posten. Göteborgs-Posten. That was actually Swedish newspaper. In Göteborgs-Posten, that was Swedish newspaper, it was published on 8th August 1887, the first publication of it. Well, as I say, this had been considered by Selma as well to be her best work. She herself considered to be her best work, as the Rattrap has a similarity with a French fable named Les Hommes aux Petites Pads. Les Hommes aux Petites Pads is actually a French fable that was written by Aesop. Aesop was the writer who wrote this French fable entitled Les Hommes aux Petites Pads. That was a French fable that also tells the story of a rat trap seller. Rat trap seller. So the same story had been used by Selma in the story that is the Rattrap, published on 8th August 1887 in the newspaper Göteborgs
Borgs Posten is a Swedish newspaper. Okay? Well, this work has some character, and real life people are playing the role. Real life character or people will find there the story of Selma playing role. In the story of Selma, we find the real life people are playing role, and that goes with actually her own husband's name, and that was actually Isaac Scotsburg. Isaac Scotsburg. That was the name of the husband of Selma. Lagerlof. And Isaac has been used as a character there in the story. And the next character is Frederick Thorny. Frederick Thorny is the next character. Means even the two characters from this story, you will find one that is Scotsburg, that was the name of the husband of Selma. She has used this man as a character in her stories. That's how the real life characters. And the next character is also a man, real man, named Frederick Thorny, has been used here in the story. So the two that we know has been used here in the story Rattrap as well, the real life character. This was actually her craftsmanship, how to use these in her work, and she did it superbly in her work. While reading, we don't actually realize even for a second that she is making the use of such real character in a fictional conditions. Right? We move with the text and you will have to be very careful. Well, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये कहानी एक तरह से रैट ट्रैप सेलर की है, और ये कहानी दो बातों को ध्यान में रख करके हमें समझने की कोशिश करना चाहिए. एक जो सबसे बड़ा इसका लेसन है वो ये कि ज़िंदगी का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी भी अप होती है, कभी भी डाउन होती है, किसी भी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में आपको ले जा सकती है. बट आपको हार नहीं मानना है, आपको हमेशा एक अच्छी कोशिश करना, एक अच्छा अटेम्प्ट लेना है और अपने आप को हर बार अपने वर्चू के साथ चलने की कोशिश करना चाहिए. दूसरी बात जो इन्होंने हाईलाइट की है कि आदमी अगर एक बार अच्छा हो फिर बुरा बन जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि वो फिर से अच्छा नहीं बन सकता है. ज़रूरत होती है उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ कराने की कि एक्चुअल में वो क्या है, सच में वो बुरा इंसान नहीं है जो बन गया है, या वो लालची इंसान नहीं है जो वो बन गया है, बल्कि उसकी अपेक्षा कुछ अलग ही है जिसको उसे जानना चाहिए. दूसरा, इसका जो बहुत बड़ा फिलॉसफी है, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूंगा यहाँ पर. रूसो के उस स्टेटमेंट्स को, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन. आप सारे लोग जानते हैं कि रूसो का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया फेमस कोटेशन दुनिया की सारी फिलॉसफी को अपने साथ रखता है, जिसको बाद में पी.बी. शेली जैसे बड़े पोएट ने प्रूफ किया है अपनी पोएम्स लाइक ओड टू द वेस्ट वाइंड से. और वो बात यहाँ पर सल्मा लैगरलॉफ भी अपने स्टोरी से प्रूफ कर रही हैं
कि एक्चुअल में जैसे हम सारे लोग इस लाइफ में आते हैं ना, तो बिल्कुल फ्री स्पिरिट के साथ आते हैं, किसी से कोई मोह माया नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट आते हैं, फ्रीली आते हैं। फिर इस दुनिया में जो ये धन दौलत है ना सारी, ये ऐसे ही हमें जकड़ते हैं ना कि हम छटपटा के रह जाते हैं। कैसे? जैसे रैट ट्रैप तो आप जानते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए जो चूहेदानी आप कह सकते हैं होता है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी चूहे को पकड़ना है तो रैट ट्रैप के अंदर कुछ फूड रख देते हैं, मटेरियल। चूहा एक दो बार विचार भी करता होगा शायद, है ना, जाने से पहले कि यार खाएं कि ना खाएं। फिर उसको लगता है अरे देख ही कौन रहा है, अरे एक बाइट लेने में क्या जा रहा है, और वो एक बाइट लेना है तो उसका रैट ट्रैप में फंसना है। ऐसे ही हम लोग अपनी जिंदगी में होते हैं, कई चीजें हमें ललचाने के लिए, उकसाने के लिए सामने आती हैं, हम एक दो बार अवॉइड भी करते हैं और फिर कहीं ना कहीं उस चीज की जाल में फंस जाते हैं। चूंकि वो अट्रैक्टिव होती है इसलिए हमारे फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हम सच में फंस जाते हैं। तो ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखना है और ये बात इसको इस स्टोरी के ज़रिए आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सारे लोग छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उसमें फंस जाते हैं और वैसे ही अपने आप को भटके हुए पाते हैं, जैसे कि किसी घने जंगल में हम खो जाएं और फिर हमको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. ये एक समय की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो रैट ट्रैप्स को छोटे छोटे वायर से बनाया करता था, उसको बेचने का काम किया करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. इतना वो मजबूत तो नहीं था फाइनेंशियली कि खुद मटेरियल खरीदता, तो मटेरियल को भीख मांगता था। कभी चला जाता था किसी पुरानी फॉर्म में, तो जो फॉर्म के कटे हुए हिस्से होते थे, छूटे हुए हिस्से, वो उधार लेके चला था भीख मांग करके। या स्टोर पर, जैसे स्टोर होते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी बच गई तो लोग फेंक देते हैं, तो उसको जाकर ले आता था और उसी को लगाकर रैट ट्रैप बना देता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ लगा तो था नहीं रहा, मतलब भीख मांग कर आता था, उसी वायर से रैट ट्रैप बनाता था, तो कोई लागत तो नहीं थी। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि न लागत होने के बावजूद उसका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो धीरे धीरे वो दोनों काम करने लगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, पहले नहीं कर रहा था, पहले तो उसने एक ही काम किया, फिर धीरे धीरे उसको एहसास हो गया कि एक काम से हो नहीं पाएगा ये, मतलब इतना नहीं अर्न हो पा रहा था कि अपना फूडिंग कर सके, अपने खाने की व्यवस्था कर सके। तो उसने क्या डिसाइड किया कि बेगिंग तो चल ही रहा है, थोड़ी बहुत थ्योरी, थोड़ी बहुत चोरी भी अगर मौका मिल जाए हल्का फुल्का तो कर लेंगे। तो वो भी शुरू कर दिया उसने, ताकि उसकी बॉडी और सोल दोनों टुगेदर रह सके, वो जीवित रह सके। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, तब भी जबकि उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल बिल्कुल धस गए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख तो उसकी नजरों में साफ तौर पे दिख रही थी। मतलब इतना भी फूडिंग उसके पास नहीं था कि अपनी भूख मिटा सके, अपने लिए खाने की व्यवस्था कर सके। मेहनत कर रहा है, रैट ट्रैप की सेलिंग कर रहा है, बट इसके बावजूद सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो चोरी करेगा क्यों नहीं। मतलब वो चोर इनिशियली नहीं है, चोर सिचुएशन के अनुसार। आप समझने की कोशिश कीजिए, बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए, मीनिंग पूछ सकता है फ्रेज का मतलब क्या हो, मतलब खुद को जीवित रखने के लिए उसने ये थ्योरी का भी काम शुरू कर दिया, एक तरह से चोरी का भी काम शुरू कर दिया। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. हम और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह के वेगाबॉन्ड के लिए किस तरह से मोनोटोनस, एक जैसी नीरस लाइफ हो जाती है।
हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो हर वक्त पैदल चलता रहे सड़कों के किनारे किनारे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और हर वक्त उसके साथ कोई होता ही नहीं था। भाई गरीबों से कौन दोस्ती करता है, सड़क किनारे जाने कितने लोग पड़े रहते हैं, हम लोग तो हालचाल भी नहीं पूछते, देखते तो है नहीं, हालचाल क्या पूछेंगे। तो उसका अपना खुद का मेडिटेशन होता है, मतलब अकेले पड़ा हुआ है अपने अब दुनिया में, वो उधेड़ बुन में लगा हुआ है, क्या अच्छा क्या बुरा सब सोचता रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन अचानक से उसको एक बहुत बड़ा विचार आया दिमाग, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो सच में उसको बड़ा मजेदार लगा। उसको लगा पहली बार कि कुछ अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आया हुआ। He had naturally been thinking of his rat traps. सच बात तो यह है कि उसका विचार पहले इस बड़े विचार पर नहीं था, उसका विचार रैट ट्रैप पर ही चल रहा था। When suddenly he was struck by the idea, अचानक से एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया। The whole world about him, क्या वो सोचने लगा कि उसके आसपास की जो सारी दुनिया है ना, वो सारी दुनिया किस तरह की है, उसके बारे में सोचने लगा। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, सारी दुनिया जिसमें उसको ज़मीन दिखते हैं, उसको बादल दिखते हैं, बारिश दिखती है और सागर दिखते हैं। इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, जिसमें उसको शहर दिखते हैं और गांव दिखते हैं। और नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। एक्चुअली चाहे ये सागर हो, चाहे ये ज़मीन हो, चाहे ये शहर हो, चाहे ये गांव हो, उसको बाद में समझ में आया कि सारे रैट ट्रैप का बिग फॉर्म है। मतलब रैट ट्रैप छोटा हम बनाते हैं और ईश्वर ने ये बड़ा सा रैट ट्रैप हम लोगों के लिए बना रखा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। इस दुनिया का कोई और पर्पस तो कभी था ही नहीं, इस दुनिया का कभी कोई और मकसद तो था ही नहीं, अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। केवल लोगों को फंसाने के लिए बेट्स रखते थे। बेट्स आप जानते ना, जिससे मछली को पकड़ने के लिए चारा होता है, वैसे ही ये पूरी दुनिया हमारे लिए बेट्स बनी हुई है। बेट्स फॉर पीपल। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक्स, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him and then everything come to an end। बिल्कुल खूबसूरत लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, याद रखिएगा आप लोग। इन्होंने कहा इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये दुनिया हमें क्या देती है, संपत्ति देती है और उस संपत्ति से हमें खुशी मिलती है। शेल्टर एंड फूड, हमारे लिए घर वगैरह की व्यवस्था हो जाती है, खूबसूरत घर बनाने में, फूड अच्छे अच्छे खाना खाने में। हीट एंड क्लॉथिंग, कभी ज़रूरत पड़ी तो हमें गर्मी का भी एहसास इस दुनिया से हो जाता है, और क्लॉथिंग, कपड़े खूबसूरत मिल जाते हैं। एग्जैक्टली एज द रैट्रैप ऑफर्ड। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम घर बनाने के लिए परेशान, कोई कपड़ा पहनने के लिए परेशान, कोई खाना कमाने के लिए परेशान, कोई शहर में रहने के लिए परेशान, कोई गांव में रहने के लिए परेशान, किसी को पानी को हड़पने की परेशानी, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर अराउंड अस जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग उसी तरह से खींचते चले जाते हैं जैसे रैट ट्रैप में रखी हुई चीज एंड पॉक होती हैं। एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पॉर को या फिर चीज को टच करने के लिए थोड़ा सा भी हमारे मन में लालच आता है, इट क्लोज इन ऑन हिम। जैसे ही हम इसको टच करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है रैट ट्रैप अपने आप हमें अपने अंदर ले लेता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, फिर तो आपकी आज़ादी गई। कहने का मतलब एक बार हम इस दुनिया की जाल में फंस जाते हैं तो फिर इस जाल से बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। ऐसे ही कुछ चूहों का होता है, वो लालच में वो चीज़ को खाने के लिए, पॉर्क खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन होता जैसे ही वो एंटर करते हैं हल्का सा रैट ट्रैप स्लिप करता है और वो क्लोज्ड, फंस के रह जाते हैं। हम सारे लोग, किसी को रिचेस चाहिए, किसी को जॉय चाहिए, किसी को शेल्टर चाहिए, किसी को फूड चाहिए, किसी को क्लॉथिंग चाहिए, किसी को हीट चाहिए। इन सारी चीज़ों को कमाने के चक्कर में इस दुनिया रूपी जाल में फंस के रह गए। ये संसार
एक तरह का रेट ट्रैप है। द वर्ल्ड हैज ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये बात तो सच है, इस रेट ट्रैप सेलर के लिए दुनिया कभी काइंड नहीं थी, कभी अच्छी नहीं थी। सो गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। क्योंकि इस दुनिया से कभी खुशी मिली नहीं उसको, इसलिए कभी उसको इस बात का ऐतराज नहीं रहा कि वो दुनिया के बारे में क्यों गलत सोचता है, क्योंकि दुनिया से खुशी नहीं मिली है। और जब खुशी मिली नहीं है तो सोचना क्या, नहीं सोचता उसके बारे में। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज। ये उसके लिए मजेदार पास टाइम हो गया था, विषय बन गया था मनोरंजन का। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, कई उसके खौफनाक प्लॉडिंग रही, पैदल चलने की यात्रा रही। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उन लोगों के बारे में वो सोचता था जिनके बारे में वो जानता था। हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो लोगों ने अपने आप को इस खौफनाक लालच रूपी जाल में अपने आप को फंसा लिया। मतलब हम लोग भी देखते हैं ना अपने आसपास के लोगों को कि कैसे ये यार कुछ और कर सकते थे, ये इस जाल में फंस गया है, होता है ना। ऐसा ही एक एहसास, ऐसी ही एक फीलिंग राइटर यहां पर शेयर कर रहे हैं कि हमारी दुनिया में हम लोग देखते भी हैं कई लोग ऐसे जाल में फंसे हुए। तो उसी तरह से ये जो रेट ट्रैप सेलर है ना, वह भी देखता है कि मेरा वो दोस्त, मेरा वो वाला आदमी, मैं उसको जानता हूं, वो किस तरह से दुनिया की लालच में, दुनिया की कमाई में फंस के रह गए हैं, इसके बारे में वो सोचता है या जानता है, उनके बारे में सोचता रहता। एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बहुत से ऐसे लोग जो बेट के आसपास सर्कल करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक के दुख को देख करके समझ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक चूहा फंस गया है एक बार तो दूसरी बार वो बेट को टच करने नहीं जाएगा, वो दूसरा चूहा भी टच करने जाएगा। तो हमारी दुनिया ऐसी ही है, हम जानते हैं कि इसी काम को करके अगला बंदा परेशान रहा है, लेकिन हम उससे सीख नहीं लेते हैं, हम भी उस काम को करने जाते ही हैं अगली बार। तो सारे लोग, कुछ लोग तो सच में उस जाल में फंस चुके हैं और कुछ लोग अभी भी उस रेट ट्रैप के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, जिनको ये रेट ट्रैप सेलर पर्सनली जानता था। वन डार्क इवनिंग ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड। एक अंधेरी शाम थी जब वो रोड के किनारे किनारे निकल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। उसकी नजरों के सामने एक ग्रे कलर की कॉटेज दिखी और उसकी नजर वहां पर गई। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने सोचा कि अब रात अंधेरी हो गई है तो कहीं और कहाँ जाना है, तो रात का शेल्टर हम यहीं ले लेते हैं, शरण यहीं ले लेते हैं, रुकने की जगह यही बना लेते हैं। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उनको मना नहीं किया गया, अर्थात यहाँ लिटॉर्ट्स का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं लिटॉर्ट्स फिगर ऑफ स्पीच, मतलब उनका वेलकम किया गया। उसने शरण मांगा कि रात भर मुझे ठहरना है, तो अगले बंदे ने उनको शरण दे दिया। नॉट वॉज ही रिफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। आमतौर पर जो फेसेस उनको मिलते थे, जो चेहरे उनको मिलते थे, जो लोग उसको मिलते थे, वो कैसे मिलते थे? सोर फेसेस वाले। सोर फेसेस मतलब क्या हो गया? मतलब कड़वाहट की भाव से देखने वाले, कोई उसको प्यार से देखने वाला नहीं मिला। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी नजरें दूसरों को क्रिमिनल बना देती है ना। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगर हम किसी को नफरत के भाव से देखेंगे, नफरत के भाव से देखेंगे, कभी प्यार आएगा ही नहीं अगले बंदे को, तो वो मर्डरर तो बनेगा ही, एक दिन तो क्रिमिनल बन ही जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यार ये फिर दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, है ना। तो ऐसा लगना चाहिए उसको कि नहीं, इस दुनिया का नुकसान करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तभी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम ना जानते हुए भी कई बार क्राइम करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे ये कह रहे हैं कि लोगों की नजरें जब भी मिली तो स्वीट एक्सप्रेशन के साथ नहीं मिली, सोर एक्सप्रेशन के साथ मिली, कड़वाहट की एक्सप्रेशन के साथ मिली। Ordinarily met him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness.
एक्चुअली उस कॉटेज का जो ओनर था एक ओल्ड मैन था। ग्रे कॉटेज का जो ओनर था वो एक ओल्ड मैन था, और ये ओल्ड मैन चाइल्डलेस था। चाइल्डलेस, और इसकी वाइफ भी नहीं थी। विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड। तो उसको लगा यार अब वाइफ होती तो वो भी बात करता रहता, बच्चे रहते तो वो बात कर लेता, लेकिन ना बच्चे ना वाइफ, तो बात किससे करे। तो उसको भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम आज की रात को ये मिला तो जिससे मैं बातें कर सकूंगा, तो बात करने के लिए मिला। उसको भी अच्छा लगा, ठीक है आ जाओ। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। थोड़ी सी खिचड़ी टाइप का भोजन, पॉरिज बनाया था, उसने उनको भी सर्व किया कि भाई आप भी खाइए हम भी खाते हैं। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल that it was enough both for the stranger's pipe and his own। फिर रात का वक्त था तो शायद हुक्का वगैरह पीते रहे होंगे जैसे हमारे यहाँ होते हैं, तो वो अपने पास से निकालता है एक थैली, छोटी सी थैली, उस थैली में कुछ टोबैको रहती है और वो दोनों लोग फिर यूज़ करते हैं अपने अपने पाइप में, दोनों के लिए पर्याप्त रहता है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर उसने कार्ड्स को निकाला, पुराना ताश का पत्ता रखा था, एंड प्लेड मैजुलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और अपने गेस्ट के साथ वो मैजुलिस खेल रहा था, और ये मैजुलिस का गेम कार्ड का गेम था। कार्ड प्ले किया तब तक जब तक कि उसके सोने का टाइम नहीं हो गया, तब तक ये मैजुलिस का गेम चलता रहा उसके लिए। मैजुलिस गेम। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। देखिए वो जो ओल्ड मैन था वो बड़ा ही जनरस था। ये ओल्ड मैन बड़ा ही उदार मन का था, और जितना वो उदार मन का था उतना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। ये बात तो बिल्कुल सही मैं मानता हूँ। जो उदार मन वाले होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा होता है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस ऑफ ट्रस्ट, वो लोगों में भरोसा बहुत करते हैं। आपको मालूम है भरोसा कौन करता है? जिसके अंदर लोगों को क्षमा करने की क्षमता होती है। अगर आप लोगों को क्षमा नहीं कर सकते ना, तो आप कभी भरोसा ही नहीं करेंगे। और भरोसा, क्षमा तभी हो सकती जब आपके अंदर उदारता हो, आप दूसरों को समझ सकें कि हाँ ये गलती से हो गया, तभी आप किसी को क्षमा कर पाएंगे। तो यहां पर जो सेंस है वो उसी बात का है कि एक रात, अभी रात गुजरी भी नहीं है, वो आता है जो बड़े प्यार से, जो खुद खा रहा है वही उसके लिए खिला रहा है। ऐसा नहीं घर में बच गया तो देंगे, नहीं तो नहीं, है ना। जो पॉरिज अपने लिए बनाया था उसको भी। टोबैको भाई नेचुरल है, गरीबों के दुनिया का सफर इसी के आसपास घूमता है। तो टोबैको उन्होंने उठाया तो अपने लिए भी लिया, दोस्त को भी। फिर दोनों बैठकर मजलिस खेलते हैं, ताश का पत्ता खेलते हैं, और अब सोने का टाइम हो गया तो कुछ भी चीज है जो बताना चाहता है वो। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter। एक्चुअल में ओल्ड मैन ने बताया कि वह अपने युवावस्था के दिनों में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, और क्रॉफ्टर के रूप में वो काम करता था एक जगह जिसका नाम था रैम्सजो आयरन वर्क्स। रैम्सजो आयरन वर्क्स पे अपने युवावस्था के टाइम में ये ओल्ड मैन एक क्रॉफ्टर के रूप में काम किया करता था। हैड वर्कड ऑन द लैंड, और सच में वहां पर रहते हुए उसने काम किया था जमीन पर भी। नाउ दैट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट लेबर। अब चूंकि ये क्रॉफ्टर ओल्ड हो गया है, तो ओल्ड होने के बाद अब इतना डे लेबर तो उससे हो नहीं सकता कि मेहनत करे खेती बाड़ी काम। इसलिए इट वॉज हिज
काउ विच सपोर्टेड हिम। तो उसके पास एक काउ थी और काउ के मिल्क से उसका सारा काम चल रहा था। काउ लास्ट में उसको सपोर्ट कर रही है, उसके पास काउ है जिसके मिल्क से वो काम करता है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये बातें जो कर रहा था बड़ा अजीब लग रहा था सुनने में। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्योंकि जो काउ थी वो हर दिन उसे मिल्क देती थी, जिससे वो क्रीम भी निकाल सकता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और तो और इसके क्रीमरी से या क्रीम से 30 kroner उसने पिछले लास्ट मंथ में कमाई किया था। मतलब इतना उसको कमाई हो गया कि 30 kroner के बराबर उसको कमाई इस काऊ के मिल्क से हो गया था। 30 kroner पेमेंट। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। स्ट्रेंजर्स जो था वो उसको इनक्रेडुलस टाइप का आदमी था, उसको भरोसा नहीं हो रहा था यार कि ये आदमी कैसे सारी चीजें बताए पड़ा हुआ है। मतलब अगर आपको ही किसी चीज से फायदा होगा, आप झोपड़ी में रह रहे हो, तो आप बताओगे क्या कि पिछले महीने हमने इतना कमाया उतना कमाया। भाई ठीक है, शरण दे दिया, आप आओ खाओ के चले जाओ। लेकिन नहीं, ये आदमी सब बोले पड़ा हुआ कि मैं क्राफ्टर था, बहुत मेहनत करता था, रैम्स जो आयरन वर्क्स पे काम किया, ज़मीन पर खेतीबाड़ी का काम किया, बूढ़ा हो गया हूँ तो कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास एक काऊ है, वो बड़ी क्रीमरी है, बड़ी क्रीम वूम निकलती है उसके दूध से, तो उसको बेचकर मैंने पिछले महीने 30 kroner कमाए हैं। और देखिए क्या करता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप। बताते बताते बुढ़ा उठ गया। उठ गया मतलब ऊपर मत सोचिएगा, बिस्तर से उठ गया। एंड वेंट टू द विंडो। और फिर अपने बिस्तर के पास से उठकर विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लीदर पाउच। वहां से एक लेदर का पाउच निकाला। विंडो के पास ही उसने अपने लेदर के पाउच को रखा था और लेदर पाउच को वहां से निकाला। लेदर पाउच विंडो के पास से। विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। जो खिड़की का फ्रेम है उसमें नेल एक खूंटी टाइप का है, उसमें वो टंगा हुआ था, वहां से लेकर आया। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। और क्या किया, वहां से आने के बाद उसके पास 3 बिल्स थी जो 10 kroner की थी। उसके पास आकर के वो 10 kroner वाली जो बिल है उसको निकाल करके दिखा रहा है। वाह रे वाह बुड्ढो, समझ लीजिए बुढ़ऊ फंसा रहे हैं, है ना। These he held up before the eyes of his guest। तीनों एक्चुअली पुराने जमाने वाले लोग नोट को इतना मोड़ देते थे कि बाद में नोट खुद कंफ्यूज होती थी कि मैं ही नोट हूं कि कोई और, है ना। इतना तोड़ मरोड़ के, तो बिल्कुल सिकुड़ी हुई रिंकल्ड वर्ड यूज किया, एकदम उसको झुर्रियां हो गई, नोट को झुर्रियां हो गई, सोच लीजिए आप, है ना। तो 3 wrinkled 10 kroner bills, these he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch। फिर क्या किया, उठा करके उसे फिर से पाउच में रख दिया, दिखाया। और आमतौर पर अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है। अब दिखा रहे तो हम क्या बोले, भैया आपके पास है, मान रहा हूं 30 kroner है, 10-10 की आपके पास 3 नोट हैं, मान गए, है ना, ठीक है रखिए। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। सुबह सुबह जब जगे तो दोनों का अच्छा तालमेल था, अच्छा रिश्ता था, मौसम बढ़िया था। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर को लगा कि जल्दी जल्दी जाओ भैया, गाय को दुहने का टाइम हो गया, तो जल्दी से उसने निकल लिया अपने। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। दूसरे आदमी ने सोचा, दूसरा आदमी कौन, रैट्रैप सेलर ने सोचा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो क्यों ना उठ जाए। ये कैसा होता है सिचुएशन, घर की बहुएं या जो घर की बेटियां होती हैं या बच्चे जो होते हैं, बेटे बेटियां कोई भी हो, वो कब उठते हैं बिस्तर से, जब ये देख लेते हैं कि मम्मी उठ गई, पापा उठ गए, दादी भी उठ गई है ना। वो इस आस से
रजाई से बाहर अपना चेहरा निकालते हैं कि भाई पापा सो ही रहे होंगे, अगर पापा सो रहे हो तो एक बार और नींद मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, अभी मम्मी तो होंगी नहीं तो ठीक है थोड़ी देर और, मतलब इस उम्मीद से नहीं कि चलो उठना है ना, अगर कोई ना उठा हो तो हम काहे के लिए फालतू उठें, है ना ये। लेकिन अगर कोई उठ जाता है तो क्या होता है, चलो यार उठते हैं भैया, सब जग गए हैं, अब क्या लास्ट तक हम ही सोते रहेंगे क्या, शर्मा करके। तो द सेम सिचुएशन, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर तो बेचारा थका हुआ, उसके पास कौन सा काम है, बस यही काम है कि रेड ट्रैप सेल करे, थका हुआ, जल्दी सोने की जगह मिलती नहीं है तो अब मिला हुआ सो रहा था, लेकिन उसको लगा अब घर का मालिक ही जग गया है तो हम क्यों बिस्तर में रहें, चलो हम भी उठते हैं, उठ गया। स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक ही बिस्तर से उठ गया है तो हम क्यों बिस्तर में पड़े रहे, हम भी उठ जाते हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उसी वक्त दोनों ने कॉटेज को छोड़ा। द क्रॉनर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने उसको अपने दरवाजे को बंद किया और अपने जेब में चाबी को रख लिया। द मैन विद रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, रेड ट्रैप सेलर जो था उसने भी उनको गुड बाय कहा और थैंक्स भी कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन जैसे ही आधे घंटे का समय हुआ, हाफ एन आवर, आधे घंटे के टाइम के अंदर ही द पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, पेडलर मतलब रेड ट्रैप सेलर, फिर से वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, क्योंकि उसने खिड़की देख लिया था भाई साहब ने कहां पर टांगा हुआ है, सब कुछ तो बताए थे, तो सिर्फ खिड़की के पास गया। एंड स्मैश्ड अ पेन, किसी भी चीज का यूज करके, जो विंडो में लगा हुआ पेन था, शीशा था, उसको स्मैश किया, उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हैंड को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 क्रॉनर, और जिस पाउच में 30 क्रॉनर रखे हुए थे उस पाउच को, लेदर के पाउच को उसने पकड़ लिया, 30 क्रॉनर वाले पाउच को ले लिया। ही टुक द मनी, उसने उसमें से 30 क्रॉनर वापस लिया। एंड thrust it into his own pocket, और जल्दी से अपने पॉकेट में पैसे को रखा। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place, और इसके जगह पर ही फिर से लेदर पाउच को उसने रख दिया। And went away, और फिर वहां से निकल गया। मतलब उसको लगा कि चलो ठीक है, अब तो हमारा काम हो गया, जो हम करना चाहते थे वो चीजें हो गई। और इन दैट वे अब उसके लिए यहां रुकने का कोई मतलब तो है नहीं। एक्चुअली अब समझ रहे हैं आप, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस माया जाल में फंस जाते हैं। तो ये तो भाई साहब रेड ट्रैप सेलर थे, बात इनको समझ में तो आ गई थी कि सारी दुनिया एक माया जाल है, इसमें हर एक चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करती है ना। एक बार आकर्षित करेगी, आप उस चीज को करेंगे, फिर उसके बाद आप फंस जाएंगे और फिर फंसे हुए छटपटाएंगे। भाई साहब को ज्ञान तो था लेकिन अनुभव शायद नहीं था। अब ज्ञान बिना अनुभव के, फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि जो स्टडीज होती हैं, जो नॉलेज होती है विदाउट एक्सपीरियंस ना, बड़े खतरनाक होते हैं। तो वो यहां पर दिखेगा कि किस तरह से ये एक खतरे में, एक समस्या में फंस जाता है, जबकि इसके पहले इसने खुद कहा था कि इस दुनिया की धन दौलत, कपड़े और संपत्तियां, घर बार, जितनी चीजें सब हमको अपनी ओर फंसाने की कोशिश करती हैं, अपने जाल में लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन बात वही है, ज्ञान अपनी जगह पर, एक्सपीरियंस अपनी जगह पर, जिंदगी अपनी जगह पर है। तो जिंदगी का जाल जो बुना गया था उसमें रेड ट्रैप सेलर फंस चुका है, खुद चूहा बन गया है, और 30 क्रॉनर ने उसके लिए बेट का काम किया। अगले पार्ट में देखेंगे कि वो क्या हालात से होकर गुजरता। तो आज के लिए इतना ही। विल सी यू टुमारो इन द क्लास। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।